Hello students, I welcome you all for the second lecture of the TOC in CFG part. I hope आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। उस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे CFG ग्रामर लिखा जाता है और उससे कैसे कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हम निकाल सकते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे उसके, जैसे कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कैसे जनरेट करते हैं। ओके, सो हमने डेफिनेशन देखी है कि कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की कैसी डेफिनेशन है। ओके, एंड वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन to write the grammar based on the given language. Okay, so let's move on to the questions. So let's see first question. First question इस तरह से है, construct a CFG for the language which accepts set of all the strings of length different lengths given है. First उसमें beat है जो है कि exactly 2 length string. Second जो beat है उसमें है at least 2 length string, and finally we have to calculate the CFG for the at most 2 length string. और ये जो सारे जो ग्रामर हमें डिजाइन करने हैं वो ओवर द अल्फाबेट क्या है 0,1 डिजाइन करने हैं। 0,1. okay, so let's try to solve first. Okay, we will design the grammar for exactly 2 length string. तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट हम क्या करेंगे कि लैंग्वेज लिख देंगे कि लैंग्वेज क्या है, इसमें ओवर द अल्फाबेट क्या लिखना है हमें 0,1. ओके, तो एग्जैक्टली 2 लेंथ स्ट्रिंग्स पॉसिबल क्या है ओवर द अल्फाबेट 0,1. यहाँ पे हमें क्या है 2 लेंथ है एंड वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी. यहाँ पे कितने निकाल सकते हैं 0 और 1 आ सकता है, और इस प्लेस पे भी क्या आ सकता है 0 और 1. ओके, तो ये दो थिंग्स पॉसिबल है. तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस है, हमें 2 ऑप्शंस है, और यहाँ पे भी निकालने के लिए कितने ऑप्शंस है 2 ऑप्शंस है. मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वी विल गेट 4 स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज ओवर द अल्फाबेट 0,1 of length exactly 2. okay, so I will write that 4 strings which are possible over the alphabet 0,1. so it will comes 0 0 then 0 1. okay, तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट प्लेस को 0 रखा और सेकंड प्लेस को क्या किया, इट विल बी आइदर 0 और आइदर 1. ओके, सिमिलरली हम क्या करेंगे फर्स्ट प्लेस फिक्स कर देंगे दैट इज 1, और सेकंड प्लेस को आइदर 0 रखेंगे, फर्स्ट प्लेस इज फिक्स एंड सेकंड प्लेस क्या आएगा 0 आएगा. तो ये चार क्या है स्ट्रिंग्स पॉसिबल है ओवर द अल्फाबेट 0,1 ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 2. ओके, तो अब अगर हमें इसके लिए ग्रामर लिखना है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या है कि ग्रामर कंटेन्स VPPS symbols. okay, set of production rules, starting symbol, set of terminal, set of non-terminals. okay, so yes is a yes comes in non-terminal. okay, so yes produces, I have to design a CFG for these strings, or we can say that for this particular language. तो कैसे आएगा, yes produces either 0 0 और 0 1 और 1 0 or 1 1. okay, so this is the grammar for this particular language. okay, for this particular language this is the grammar, this is also a correct one, but according to definition this is correct. okay, but in many cases what we will do, we will mostly use non-terminals in the grammar. okay, means we will give the preference to the non-terminals because we have to write the grammar effectively. okay, अगर हम ऐसे लिखते जाएंगे तो for this language it is okay, but for this language at least 2 it will be difficult to write in such a way. okay, so let's rewrite this. so I will write, यहाँ पे हमने रेगुलर एक्सप्रेशंस में देखा था कि 0 और 1 को कैसे लिखते हम 0 और 1 ऐसे लिखे. okay, and in grammar or we can say that in language we have 2 places. Instead of that
we have to use 0 or 1 for first place and 0 or 1 for the second place. Okay, so for writing effective grammar, instead of 0 or 1, first 0 or 1 we will use an non-terminal, that is p, and for this also 0 or 1 we will use p. मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे आइदर 0 आएगा इस प्लेस पे और क्या आएगा 1 आएगा, दोनों एक साथ आएगा क्या, नहीं आएंगे, यहाँ पे भी क्या होगा 0 आएगा या 1 आएगा. ओके, सो बट डेफिनेट थिंग क्या है यहाँ पे कि डेफिनेटली इट विल बी ए टू लेंथ स्ट्रिंग. ओके, सो यस प्रोड्यूसेस p, we will write it, so it will give the assurance that कि यहाँ पे क्या आएगा, टू लेंथ स्ट्रिंग आएगी, आइदर 0 और आइदर 1. ओके, p मतलब क्या है, आइदर 0 और आइदर 1. और यहाँ पे हम p को क्या डिफाइन करेंगे, p gives 0 और 1. ये जो थिंग्स है इसको सेम हम कैसे लिख सकते हैं, p produces 0, p produces 1. This is also a correct way of writing. Okay, but we will prefer this way. Okay, so I will erase these things. Okay, so finally we got the uh, grammar for such languages. This is okay. So for exactly two length string, this is the final CFG. Okay, let's try to solve second one. So in second, they have asked about the string of at least two length. Okay, at least two मतलब क्या होगा कि लैंग्वेज में कौन से स्ट्रिंग्स आएंगे, at least मतलब मिनिमम टू लेंथ स्ट्रिंग. तो मिनिमम टू लेंथ स्ट्रिंग we know that 0 0 0 1. okay, just a second. again क्या आएगा 1 0 1 1, then 1 0 1 1 1 0. okay, or it will be infinite. So this language we can say that is a infinite language, and for infinite language writing grammar in such a way that is not possible. Okay, so that's why we are going with the mostly we are going with the non-terminals. Okay, so for this we know that for we have the two definite positions, means two length, at least हमें क्या चाहिए, टू लेंथ स्ट्रिंग चाहिए. तो डेफिनेटली यहाँ पे आइदर 0 चाहिए या 1 चाहिए, यहाँ पे भी 0 चाहिए 1 चाहिए. ओके, एंड लास्ट में जो आएगा कि इसके बाद एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स भी चल जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, 0 और 1 चाहिए. ओके, सो हमने इसमें देखा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन में कि अगर इन्फिनिट स्ट्रिंग होगी ओवर द अल्फाबेट 0,1, तो हम उसको कैसे लिखते थे, 0 और 1 क्लीन क्लोजर. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लीन क्लोजर का सिंबल आएगा. तो मैं यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें मिनिमम टू लेंथ स्ट्रिंग मिल जाएगी और मैक्सिमम कितने लेंथ की भी हो सकती है. तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इस चीज को, फॉर दिस 0 और 1, यहाँ पे भी क्या आएगा 0 और 1, एंड यहाँ पे क्या आएगा 0 और 1 क्लोजर. ओके, so for this 0 or 1 we are using the symbol p, for this 0 or 1 we are using the symbol p, and for this we are going to use new symbol, that is q. Okay, so the grammar becomes yes produces p, p and q. ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर q मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर एप्सिलॉन ये क्लोजर की वैल्यू अगर 0 होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें टू लेंथ मिनिमम टू लेंथ स्ट्रिंग डेफिनेटली मिलेगी. ओके, सो वी हैव टू डिफाइन दैट व्हाट इज q. ओके, सो फर्स्ट आई विल डिफाइन व्हाट इज p, दैट इज सेम एज 0 और 1, एंड फाइनली व्हाट इज q. q इज q क्या होगा कि 0 और 1 का क्या है, वो क्लोजर है, मतलब 0 एनी नंबर ऑफ टाइम्स कम आ सकते हैं, 1 एनी नंबर ऑफ टाइम्स आ सकते हैं. सो इट विल बिकम, अगर इनिशियली 0 आता है तो देन वी विल यूज 0q, दैट मींस एनी नंबर ऑफ जीरोस पॉसिबल. देन अगर इनिशियली 1 आता है, 1 1 1 1 1 1 1 1, सारे 1 से फॉर्म होने वाली स्ट्रिंग्स पॉसिबल होती है, दैट्स व्हाई 1q. एंड फाइनली
यहाँ पे क्या हो सकता है, क्यू बिकम्स एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगी हमें मिनिमम 2 लेंथ स्ट्रिंग। तो क्यू अगर एप्सिलॉन चाहिए तो हमें क्या 0 होगा तो क्या होगा यहाँ पे क्यू बिकम्स एप्सिलॉन। सो दिस इज द CFG for the string which is having the length at least 2. Okay, let's see third one, at most 2 length string। तो यहाँ पे at most 2 length string में क्या होगा कि हमारे पास क्या है कि आइदर 0 लेंथ स्ट्रिंग हो सकती है, 1 लेंथ स्ट्रिंग हो सकती है और 2 लेंथ स्ट्रिंग हो सकती है। तो अगर इसके लिए ग्रामर लिखूंगा तो मैं क्या आएगा, एक तो एप्सिलॉन भी प्रेजेंट हो सकता है, 0 प्रेजेंट हो सकता है, 1 प्रेजेंट हो सकता है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ओके, तो इतने नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स पॉसिबल हो सकते हैं इन दिस लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे हम क्या ये अगर फर्स्ट लैंग्वेज ऑब्जर्व करते हैं हम, यहाँ पे क्या था हमारे पास, बस 0 और 1 था फर्स्ट प्लेस पे, और दूसरे प्लेस पे भी क्या था 0 और 1 था। यहाँ पे क्या है, एक चीज ऐड हो जाएगी कि यहाँ पे नल भी प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब नल स्ट्रिंग भी प्रोड्यूस हो सकती है, 1 लेंथ स्ट्रिंग भी प्रोड्यूस हो सकती है एंड 2 लेंथ स्ट्रिंग आल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0 और 1 वी आर हैविंग एन एप्सिलॉन, मतलब इन तीन सिंबल में से कोई भी सिंबल आ सकता है फॉर फर्स्ट प्लेस। ओके, और जो सेकंड प्लेस होगा उसके लिए भी क्या होगा, सेम 0 और 1 और एप्सिलॉन। ओके, तो सेम चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ इसके लिए क्या यूज करेंगे, इसके लिए p यूज करेंगे और इसके लिए भी क्या यूज कर रहे हैं p। सो द ग्रामर बिकम्स, क्या आएगा ग्रामर हमारा, यस प्रोड्यूसेस p p। ओके, नाउ p प्रोड्यूसेस क्या आएगा, क्या होगा p प्रोड्यूसेस, इस ग्रामर में क्या था 0 और 1 था, क्योंकि एग्जैक्टली 2 लेंथ स्ट्रिंग चाहिए थी हमें। यहाँ पे क्या हो सकता है, नल स्ट्रिंग भी आल्सो पॉसिबल एंड 1 लेंथ स्ट्रिंग इज आल्सो पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। तो यहाँ से अगर हम ये यूज करता हो तो मुझे क्या जनरेट करना है, सपोज मुझे 1 जनरेट करना है। ओके, बस वो यहाँ इस ग्रामर से मुझे 1 जनरेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली p प्रोड्यूसेस तो नहीं ले सकता, स्टार्टिंग करना पड़ेगा मुझे यस प्रोड्यूसेस p से। ओके ओके, तो यहाँ पे अगर सपोज मैं लेफ्ट सिंबल फर्स्ट रिप्लेस कर रहा हूँ और मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो मैं लेफ्ट सिंबल किससे रिप्लेस करूंगा, 1 से रिप्लेस करूंगा एंड देन नेक्स्ट p इज एज इट इज एंड मुझे क्या चाहिए 1 लेंथ स्ट्रिंग चाहिए, तो मैं ये 1 एज इट इज रखूंगा और p के जगह क्या यूज करूंगा फाइनली, एप्सिलॉन। सो दैट विल बिकम्स 1 लेंथ स्ट्रिंग। सो दिस इज द आउटपुट। ओके, अंडरस्टूड। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन गिवन है, लैंग्वेज है एक, वो दिस इज आल्सो ओवर द अल्फाबेट 0,1 ही है। तो लैंग्वेज गिवन है 0 to the power n वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसमें कुछ स्ट्रिंग्स लिखता हूँ तो स्ट्रिंग्स कैसे आएंगे, इनिशियल स्ट्रिंग क्या होगी 0 होगी, क्यों, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ n के जगह तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या मिलेगी मुझे 0, देन 0 0 पॉसिबल, देन 000 is also possible, then 4 times 0, okay, and it will be infinite number of strings. Okay, so this is the language and we are getting infinite number of zeros in the language. Okay, so the grammar becomes, yes produces क्या आएगा, what, यहाँ पे क्या हो सकता है, मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या चाहिए हमें, क्या मिल रही है 0 एंड आफ्टर दैट एनी नंबर ऑफ zeros are possible. So for that I am using 0 is the okay starting and then after that any number of zeros। तो any number of zeros के लिए मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ, p यूज कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं p की वैल्यू पुट करता हूँ, p की वैल्यू मुझे क्या लिखनी पड़ेगी, देयर विल बी समथिंग। ओके, और इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन डायरेक्टली यूज, इंस्टेड ऑफ जस्ट अ सेकंड, इंस्टेड ऑफ p व्हाट वी विल डू, we'll use yes produces 0s। okay, yes produces 0s and yes again producing 0। तो यहाँ पे क्या होगा,
अगर हमें अगर मुझे सिंगल जीरो चाहिए तो मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा, इस प्रोडक्शन से यस प्रोड्यूसेस जीरो से मुझे क्या मिल जाएगा, सिंगल जीरो मिल जाएगा, यस प्रोड्यूसेस जीरो। लेकिन अगर मुझे सपोज 3 टाइम्स जीरो चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यस प्रोड्यूसेस जीरो, यस ये यूज करूंगा। अगेन मुझे और क्या चाहिए, 2 जीरो चाहिए, तो दिस जीरो एज इट इज एंड आई विल रिप्लेस दिस यस सिंबल एज ए जीरो यस। ओके, अगेन this 00 as it is, and instead of this yes I will directly use yes produces 0, so I will get 3 zeros. Okay, so this is the grammar for this language. Okay, next यहाँ पे क्या है, सेम लैंग्वेज है, जस्ट यहाँ पे एक चीज गिवन है, यहाँ पे मैं जीरो कर देता हूँ, n is greater than or equal to 0. ओके, सो लैंग्वेज इससे क्या आएगी, यहाँ पे n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नल स्ट्रिंग भी मिली जाएगी। ओके, तो एप्सिलॉन देन 1 1 1 ट्रिपल 1, ओके, 4 times 1 up to infinite. Okay, so I am getting this these strings in the language, and in previous language we have seen that हिंदी यहाँ पे क्या था, एप्सिलॉन प्रेजेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन प्रेजेंट है। तो मैं क्या करूंगा, सपोज स्टार्टिंग सिंबल यस यूज कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस प्रोड्यूसेस 1 यस एज इट इज, एंड इंस्टेड ऑफ दिस 0 as the terminal in previous language, here I should use 1, but the language is having epsilon also, so that's why I will use epsilon. ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे सिंगल लेंथ स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो मैं कैसे जनरेट करूंगा, यस प्रोड्यूसेस 1 यस। ओके, अगर मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, 1 जनरेटेड चाहिए, एंड इंस्टेड ऑफ यस व्हाट आई विल यूज नाउ, epsilon 1 epsilon, and that will become 1. Okay, so I will generate 1 from this. If I want yes epsilon only, okay, then I will use the production yes produces epsilon, so I will get the epsilon thing. If I want triple 1 as the output, what I will do, yes produces, what I will use, yes produces 1 yes. Okay, then again this yes produces 1 yes, and again 1 yes, and finally I will use epsilon here. Okay, so I will get 3 ones, 1 2 3. Okay, so this is the output generated by using this particular grammar. So this is the grammar for this language. Okay, next one. Next language में हमारे पास क्या है कि two things are compulsory, that is starting from 0 and ending from 1, and in middle we are getting any number of zeros and any number of ones. Okay, this means any number of zeros and any number of ones. So this is compulsory and this is compulsory, and for this we will use a symbol that is p. Okay, non terminal. Okay, so our grammar becomes yes produces क्या आएगा, yes produces 0 is compulsory, this p, and after that 1. Okay, now our task is to define, or we can our task is to write the grammar for p. So p produces, what p producing, either it will contain 0, any number of zeros, then any number of ones, or anything. Okay, so any number of, for any number of zeros I will write starting from 0 and after that p. Okay, then any number of ones I will write 1 and after that p, and if this is a this star becomes 0, then we are only getting the things as 0 1. Okay, this is the language minimum length string we are getting from this language is 0 1. So I will write here epsilon, then I will get 0 1. Suppose I want to generate 0 1, what I will do, I will write that production, that is yes produces 0 p 1, and instead of this p, what I will use, p produces epsilon, so this will become 0 epsilon 1, and this is finally we are getting 0 1 as the string from this particular language by using these production rules, or we can say that this is the CFG for this particular language. Okay,
एक लैंग्वेज है गिवन, वो द अल्फाबेट क्या है 0,1 है। अब इस लैंग्वेज को अगर ऑब्जर्व करेंगे और इससे अगर मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग अगर फॉर्म करेंगे तो क्या होगी इसमें मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग, यहाँ पे यहाँ से क्या जनरेट होगा, 0 इज कंपलसरी, 1 इज कंपलसरी, सो आई इट विल बी 0 1, और यहाँ पे क्या हो सकता है 1 इज कंपलसरी एंड 0 इज कंपलसरी, तो यहाँ पे 1 0। ओके, मतलब we are getting the strings starting from 0 and ending from 1, or starting from 1 or ending from 0, or we can shortly say that uh, this is the language for starting and ending with different symbol. Okay, so uh, this is a 0 1 closure and this is also a 0 1 closure, so instead of this we will use the symbol as p. Okay, so I am using p is the symbol, so the grammar becomes for this language is yes produces, initially क्या होगा 0 होगा, then p is there and after that 1, और क्या हो सकता है starting from 1 हो सकती है string, then p means what, any number of 0, 1 or any number of zeros or any number of ones are possible in between, and finally क्या होगा 0 होगा। यहाँ पे क्या होगा, टू थिंग्स आर कंपलसरी, आइदर ये अगर 0 से स्टार्ट हो रही है तो एंडिंग 1 से होनी चाहिए स्ट्रिंग, और 1 से स्टार्ट हो रही है तो एंडिंग कहाँ से होनी चाहिए, 0 से होनी चाहिए। ओके, नाउ व्हाट इज p, p मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज 0 1 क्लोजर। Okay, 0 1 clean closure means any number of zeros possible, any number of ones possible. So for p we will write 0 p, it will give us any number of zeros, then 0 1, sorry 1 p any number of ones, and finally if this star becomes 0, that it means epsilon is also possible. So minimum length string अगर 0 1 निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं, so instead of this what I will use, l produces क्या आएगा, सॉरी यस प्रोड्यूसेस, बाय यूजिंग ग्रामर हम निकालेंगे, यस प्रोड्यूसेस क्या आएगा, मुझे 0 1 निकालना है तो क्या आएगा, यस प्रोड्यूसेस आई विल यूज दिस प्रोडक्शन 0 p 1 and instead of p I am going to use epsilon, so the string I am getting is 0 1. Suppose this is the string 0 0 0 and 1 starting and ending with different symbols, so this string is possible to find by using the given grammar. So कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय डिसीजन बाय पार्स ट्री हम देखते हैं। सो यस प्रोड्यूसेस क्या निकालना पड़ेगा मुझे, इनिशियली क्या चाहिए 0 चाहिए एंड एंडिंग में क्या चाहिए 1 चाहिए, सो आई विल यूज दिस प्रोडक्शन दैट इज yes produces 0 p1, so yes produces 0 p1. Okay, now what the things I want in next, that is 0 0. Okay, so any number of zeros are possible, so instead of p now I will use this production, p produces 0 p, so p produces 0 p. Again finally we want again 1 0, so instead of this p again we will use that is 0 p, and finally we want 1 is already present, so p produces epsilon. So if we will find out the yield of the tree, then we will get the our solution, that is 0 0 0 1. So we want output as 0 0 0 1, so this output is generated by using these reduction rules, or we can say that by using this CFG. Okay, similarly next question is that starting and ending with same symbol, starting and ending with same symbol मतलब क्या हो सकता है कि start भी सेम सिंबल से होनी चाहिए और एंडिंग भी सेम सिंबल से होनी चाहिए। तो यहाँ पे लैंग्वेज कैसे आएगी, अगर इस लैंग्वेज को इस फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे आएगा, दैट इज 0 से स्टार्ट हो रही है स्ट्रिंग, आफ्टर दैट एनी नंबर ऑफ 0 और 1 पॉसिबल, एंड आफ्टर दैट एंडिंग विद 0, और अगेन 1 से स्टार्ट हो रही है 0 और 1 कुछ भी आ सकता है आफ्टर दैट, एंड आफ्टर दैट कंपलसरी इट हैज टू एंड बाय 1, but along with this these two more things will come, like suppose single zero को भी हम क्या कह सकते हैं, it is starting with same symbol and ending with same symbol, क्योंकि एक ही symbol है, so this is also possible. Similarly 1 is also possible, and
Null string means that is also a type of starting and ending with same symbol. So these three things will come extra in this particular language. Okay, so we will write the production rules for these. So the production rules become, yes produces क्या आएगा, yes produces 0 p 0 for this one. Okay, instead of this we are using p. Then again for this one, again we are using p only. So or we are getting 1 p 1, or we want 0 or 1 or epsilon. Okay, whenever we want, suppose yes we want to produce 0, then directly we will use yes produces 0. So it will give us an output as 0, starting and ending with same symbol. Okay, then now we have to write the productions for p. So p क्या है, any number of zeros possible, any number of ones possible. So it will becomes 0 p. Okay, then 1 p, and if this the star becomes 0, so we are going to use epsilon. So p produces epsilon is also there. So finally we can say that this is the CFG for this particular language. Okay, let's see more question about it. So this is the one most important question, we can say that. Construct a CFG for a language given a x raised to x reverse union x 0 x reverse union x1 x reverse. Okay, और x क्या है, belongs to any number of strings possible over the alphabet 0, 1 clean closure. Okay, so the language for this this given language is we can write some strings, so that will become easy for us. So first minimum length string क्या possible होगी, यहाँ पे अगर ये 0 होता है तो this will become epsilon is also possible, then 0 is also possible, 1 is also possible, then 0 0 is possible, 1 1 is possible, then 1 0 1 is also a palindrome, then 0 1 0 is also a palindrome, or 0 0 1 0 0, this is also a palindrome string. So such type of strings possible in this particular language. So for this we have to write the context free grammar. Okay, so we will use the starting symbol as yes. So yes produces क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम इसके लिए लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, x 0 x रिवर्स. सो दिस विल बिकम, यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग 0 से होगा, देन एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स इन बिटवीन, एंड एंडिंग भी क्या होगा, 0 से होगा. ओके, सेम स्ट्रिंग. और दूसरी चीज क्या हो सकती है, ये देखो स्टार्टिंग 0 से हो रहा है तो एंडिंग में भी 0 से हो रहा है, स्टार्टिंग 0 से हो रहा है तो एंडिंग भी 0 से हो रहा है, एंड इन बिटवीन एनी नंबर ऑफ सिंबल्स पॉसिबल. ओके, देन नेक्स्ट पॉसिबल थिंग क्या हो सकती है, स्टार्टिंग अगर 1 से हो रहा है then any number of 0 or 1s in between possible, and after that ending is also from 1. Okay, so this is also over. Okay, 1 1 0 0. Okay, this will come under this. But what about these strings? Okay, so we have to write 0 or 1 or epsilon. Okay, now we have to uh, or we can say that what we will do, we will take some strings and we will see whether that string is palindrome or not by using parse tree. Okay, so first string I will use, that is 0 0 1 0 0. So this is the string and I want to generate it from by using this written grammar. Okay, बेसिकली फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं. ओके, सो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से एंड हो रहा है. ओके, 2 जीरोस है, लास्ट से भी का 2 जीरोस है, इन बिटवीन क्या है 1 है. तो यहाँ पे क्या होगा, हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर रीड करेंगे तो भी 0 0 1 0 0 मिल रहा है, और यहाँ से भी अगर रीड करेंगे तो 0 0 1 0 0 मिल रहा है. So let's draw parse tree for this. So first production I will use, that is yes produces 0
yes 0. Okay, because I want is starting with 0 and ending with 0. Okay, now leave about this. The next I will use this 0. Okay, I want a 0, so if I want 0, then I will use this production. So yes produces 0, yes 0. Okay, now next thing I want 1. Okay, I want 1, but after that I want 0 0 only. So I already having the 0 0, so I simply need a single one. So directly I will use yes produces 1. So if I will traverse this tree and find out the yield of the tree, then it will become 0 0 1 0 0. So 0 0 1 0 0. So this is the match, this is matching with this one. So uh, by using this grammar I can generate, or we can generate this particular string. Okay, similarly if I want simply 0 0, then how, or we can say that 1 1. So how can I find out it? So I will have to use yes produces 1, this production 1 yes 1, and simply instead of yes I have to use epsilon. So I will get 1 1 as a output, 1 1 as a output. So basically it will generate all the palindrome strings of length even and odd. यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, even and odd palindrome strings मिल जाएंगे, palindrome strings. Okay, understood. Let's see another question. Question है construct the CFG for the language given है a to the power n b to the power m where m comma n is greater than or equal to 1. यहाँ पे क्या है, a की पावर और b की पावर क्या है, डिफरेंट है. ओके, सो instead of this a I have to use different symbol, and instead of this b I have to use different symbol. Suppose instead of this a I am using a, then I will use b for this symbol. So the production becomes yes produces क्या आएगा, a b. Okay, so I got yes produces a b, and this a raised power n means any number of a's are possible. So finally I will get a produces क्या आएगा, 0 a, and instead of a I have to use epsilon or 0, that is based on these things. Okay, so I can use m comma n is greater than or equal to 1 है, तो यहाँ पे अगर सिंगल लेंथ स्ट्रिंग भी चाहिए मुझे, तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ a I will use a. ओके, यहाँ पे a आएगा. ओके, एंड b के लिए भी सेम रहेगा, तो b के लिए क्या आएगा, b b. ओके, और सिंपली b. ओके, तो यहाँ से देखते हैं हम, अगर मुझे मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग चाहिए, तो मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग क्या पॉसिबल है ओवर दिस लैंग्वेज. यहाँ पे अगर m और n की वैल्यू पुट करते हैं तो दैट इज ए बी. तो यहाँ से इस स्ट्रिंग से ए बी कैसे डिराइव करेंगे हम. सो यस प्रोड्यूसेस ए बी, आई विल यूज दिस प्रोडक्शन, एंड instead of this a I will use a produces a. So that will become a, this b is as it is, and instead of this b what I will do, I will use the production b produces b. So a b is the final string I am getting. Okay, this is the final string. Understood. Similarly I will take one more string. Suppose I want to generate a b. Okay, because a and b are independent to each other. Okay, because powers are different. So I want triple a, तो मैं स्ट्रिंग कैसे यूज करूंगा, यस प्रोड्यूसेस ए बी, ए पहला प्रोडक्शन यूज कर लिया, और इंस्टेड ऑफ ए व्हाट आई विल यूज नाउ, this production a produces small a capital A. So this will become small a capital A and this b as it is. Again I want two more a's, so instead of this a I will again use a produces small a capital A and this b is as it is. Then finally instead of a I want single a only now. Okay, so I will use a produces small a, so this string becomes triple a b, and finally instead of b
I will go with B produces small b. So triple A and small b is generated by using these production rules. Okay, so this is the grammar for the language L is equal to A to the power n, B to the power m, where m comma n is greater than or equal to 1. Okay, let's see another example. ओके तो ग्रामर है सॉरी लैंग्वेज है और उसके लिए हमें ग्रामर बनाना है। लैंग्वेज कुछ इस तरह ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एन, सी टू द पावर एम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए एंड बी इज हैविंग सेम पावर, सो फॉर दिस वी कैन यूज द सेम सिंबल। सो आई एम यूजिंग ए एंड फॉर दिस आई एम गोइंग विथ बी। ओके, सो द grammar becomes S produces A B. Okay, S produces A B. Now instead of this A I have to use or I want to expand this based on these things. यहाँ पे क्या होगा, A and B साथ में आएंगे, मतलब suppose there are two A's then definitely there are two B's. Suppose there are three A's then definitely after that we will get three B's according to the given language, because n and n is same. So there are suppose 3 A's, then we will not get 4 B's. Okay, 4 B's will not be possible. Okay, so S produces AB आ गया. Then instead of S what I will use, अगर मुझे मेरे पास 0 है तो definitely I am going to get 1. So A produces क्या आएगा, 0 A 1 और 0 1. ओके, सो इससे क्या मिल जाएगा मुझे, m कॉमा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो मिनिमम लेंथ अगर स्ट्रिंग मुझे ऐसी चाहिए, सपोज सॉरी इस ए बी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ए बी, सपोज आई वांट मिनिमम लेंथ स्ट्रिंग एज ए बी सी, सो आई विल यूज प्रोडक्शन एस प्रोड्यूसेस ए बी, देन इंस्टेड ऑफ ए आई विल डायरेक्टली यूज क्या आएगा, ए बी, एंड फाइनली इंस्टेड ऑफ बी हम क्या करेंगे, अभी लिखेंगे कि इंस्टेड ऑफ बी क्या कर सकते हैं हम। तो इंस्टेड ऑफ बी क्या आएगा, बी प्रोड्यूसेस सी, ओके, सी बी, दिस इज स्मॉल सी, एंड बी आफ्टर दैट वी विल गेट सिंगल सी। तो इंस्टेड ऑफ बी अगर मुझे सिंगल सी ही चाहिए तो मैं यह क्या करूंगा, कौन सा प्रोडक्शन यूज करूंगा, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल सी, सो आई विल गेट द minimum length string as a b c. Okay, so for this grammar, or we can say that for this language this is the CFG. Understood? Let's see another question. Okay, तो ये क्वेश्चन है कि राइट ए CFG फॉर द लैंग्वेज गिवन है a to the power n, b to the power sorry c to the power m and b to the power n, where m comma n is greater than or equal to 1. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, a and b क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, एंड सी क्या है, इंडिपेंडेंट, सी कितने भी हो सकते हैं। तो इसके लिए प्रोडक्शन क्या आएगा, सो अगर मैं यस यूज करता हूँ तो यस प्रोड्यूसेस क्या आएगा, इन बिटवीन क्या है, सी है वहां पे, तो अगर मैं यस प्रोड्यूसेस क्या आएगा, ए यस बी यूज कर रहा हूँ। ओके, और इंस्टेड ऑफ दिस आई एम यूजिंग अगेन यस प्रोड्यूसेस ए बी. Okay, why I'm using these two productions, okay, we will solve that by taking one string, that will be more comfortable then. Okay, so now task is that a आ गया, b आ गया, now c can be anything. Okay, c can be any number of c is possible. Okay, so this a produces क्या आएगा, c a or single c. Okay, now let's check one string. Suppose I want to generate a b c, so which production I will use, so yes produces, I will directly use yes produces a capital A and b, and instead of a I will use c. Okay, if I want to just produces single a, single b and single c, but instead of this I want to produce a then b, and after that sorry just a second, this is acb. Okay, acb, and
instead of this I want to use produce A, C and triple B. Okay, so this is the case situation. I want to produce this string. Then the production I am going to use are yes produces. क्या आएगा first production, that is A S B. Okay, so I will get this A and this B. Then again yes produces क्या आएगा A S B. Okay, so I will get A and B again. Then again I will use yes produces. क्या आएगा यहाँ पे I want triple A. So now I will use yes produces A, capital A and B, and finally instead of this A I will get C. Okay, so I will get the string triple A C triple B. Okay, by using this particular grammar. So instead of that, or that's why we have used yes produces ASB and A yes produces AAB. Whenever we want to shift towards the C, then we are using this production, and whenever we want to generate more A and more B's, then we will use this production. Okay, let's see another one. Language given है a to the power n, b to the power n, c to the power m and d to the power m, where m, n is greater than or equal to 1. तो यहाँ पे क्या है a to the power n and b to the power n है, सेम है, तो इसके लिए मैं एक सिंबल यूज कर सकता हूँ, एंड c to the power m and d to the power m है, तो इसके लिए मैं दूसरा सिंबल यूज कर सकता हूँ, दैट इज नॉन टर्मिनल. सो द grammar becomes yes produces a b. Okay, a b. Now the question is that actually I want to expand this a. So a becomes क्या आएगा any number of strings possible with a b. Okay, firstly क्या मिलेगा हमें a मिलेंगे, and then after that we will get b. So it will become a, capital A, b, and minimum length string क्या होगी, single length string होगी. So I will get a b instead of this a. Similarly for b क्या आएगा, b produces c, b, d or cd. Okay, so this is the grammar for this language. Okay, let's take one string and we will try to derive that string. Suppose a b c c d d. Okay, this is the grammar, sorry this is the string, and we have to generate this string by using this grammar. तो हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट प्रोडक्शन यूज करेंगे yes produces a b. Okay, then instead of this a we want a b only, so I will use a b and this b is as it is, and instead of this b I want two c's and two d's, so a b as it is, and instead of this b I am using c b d, and finally instead of this b I will go with a b c c d d. Okay, so this is the we can say that this is the grammar for this particular language. Next language है G2 language given है 0 to the power n, sorry 0 to the power m plus n, 1 to the power m, 2 raised to power n. Okay, so same language को हम कैसे लिख सकते हैं, language given है तो 0 to the power m n को कैसे split कर सकते हैं, जैसे कि इसको मैं ऐसे लिखूँ तो भी चलेगा 0 to the power n, 0 to the power m. Okay, this is 1 to the power m and 2 to the power n. तो यहाँ पे क्या है, 0 से स्टार्टिंग होगी, 2 से एंडिंग होगी, और यहाँ पे और एक चीज है कि जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतने नंबर ऑफ 2 होंगे. ओके, सपोज 0 0 है तो इन बिटवीन अगर यहाँ पे 0 1 भी होता है, 0 1 m की वैल्यू, देन 2 2 होगा एंडिंग में. ओके, सो लेट्स राइट एन ग्रामर फॉर दिस. सो यहाँ पे क्या आएगा, यस प्रोड्यूसेस 0, और इंस्टेड ऑफ दिस we will use another symbol, and suppose we want more these 0 and more these 2's, so we will again use same production, so 0 yes 2. Okay, now suppose we got that 0 how many we want, and after that we want
these 0 comma 1s, so we will use this production 0 a 1, 0 a 1. Let me check, sorry 0 a 2. okay, finally means यहाँ पे अगर suppose I will write that 0 s produces 0 s, sorry s 2, okay, 0 s 2, and when we want the 0 1, then again we will use 0 a 2, this production. okay, so we got two zeros and two twos. Finally we want a produces 0 1. okay, so I will expand that a, so a will become क्या आएगा 0 a 1 means we want more 0 0 0 comma 1s, means suppose the string is like 0 0, then 0 0 1 1, and this 2 2. okay, this is 0. So here we want more zeros and more ones, so we will go with this production. Or if m value is 1, so then we will use yes, a produces 0 1. So this is the context free grammar for this particular language. okay, let's see the another one. ओके, तो इस लैंग्वेज को हम एक्सपांड करेंगे सिमिलरली जो प्रीवियस वन को किया था वैसे. तो यहाँ पे क्या आएगा 0 to the power n, and we want n first only, so that's why we will use directly 1 raised to power n as it is, then 1 raised to power m, इसको मैंने एक्सपांड किया, and finally 2 to the power m. ओके, तो यहाँ पे क्या है, इनिशियली n आ रहा है एंड आफ्टर दैट m आ रहा है. तो यहाँ पे मैं एक सिंबल यूज कर सकता हूँ. सपोज यहाँ पे अगर मैं ये यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बी यूज कर रहा हूँ. ओके, सो द प्रोडक्शन बिकम यस प्रोड्यूसेस ए बी एंड आई विल एक्सपांड दिस ए. तो ये ए को अगर मैं एक्सपांड करता हूँ, तो ये क्या है, ए इज नथिंग बट एनी नंबर ऑफ जीरोस फर्स्ट एंड देन सेम नंबर ऑफ वंस एट लास्ट. सो 0 इनिशियली अगर आता है, देन if I want more number of 0 1s, so I will use this one 0 a 1, and if I want single 0 1, then I will use a produces 0 1. okay, similarly for b, b के लिए कैसे आएगा, b produces, यहाँ पे क्या है 1 और 2 है, तो then 1 b, just a second, 1 b 2, and this is 1 2, just a second, this is become 1 2. okay, so this is the CFG for this particular language. Understood? okay, let's see more questions. So these are two questions. ये particular languages given है, and उसके लिए हमें क्या बनाना है, CFG बनाना है. So the language become 0 to the power n, 1 to the power n, and 2 to the power n when n is greater than or equal to 1. And second language क्या है, l is equals to 0 to the power n, 1 raised to power m, 2 raised to power n, and 3 raised to power m, where m comma n is greater than or equal to 1. So I request all of you try to solve these two questions. Take these two questions as an assignment, and ट्राई करो इसको सॉल्व करने की. अगर कोई प्रॉब्लम आता है इसको सॉल्व करने में, तो प्लीज पुट एंड कमेंट इन द लेक्चर इन इनबॉक्स. ओके ओके, एंड आई होप आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे. अगर पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक कर देना, और कोई तुम्हें कोई डाउट वगैरह आता है तो प्लीज पुट कमेंट देयर, आई विल रिप्लाई ऑन दैट कमेंट. okay okay, then see you in the next lecture, and I will give the explanation of these two questions in the next video. okay, but before that I request all of you, please go through it and try to solve these two questions. okay, thank you so much.